student, today our topic is production budget. Budget, as you know, this is prepared earlier. Budget is always prepared earlier. This is nothing but a estimate, as you know. First, we are preparing sales budget. You will fix up a target. How much product you are going to sell into the market in near future. The sales budget is prepared first. After sales budget, you will prepare your production budget. And production budget always based on your sales budget. If in the questions sales, projected sales or estimated sales is not given, then sometime first you will prepare your sales budget, then you will go for your production budget. That means importance of the sales budget is always there. So first is your sales budget, then we are going to prepare the production budget. As you know, production means it relates to your material, it's related to your labor, and it's related to your overhead. That means again you will prepare three budget, that is material budget, labor budget, and your overhead budget. But we are concerned with the production budget. Production budget. We are going to prepare production budget. First, write down production budget based on sales budget. First one, production budget. Production budget based on your sales budget. Production budget is based on your sales budget. इसका मतलब सबसे पहले हमको सेल्स बजट बनाना है, लेकिन अगर क्वेश्चंस में बने बनाया दे दिया है तो आपको सेल्स बजट बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेल्स के बारे में क्वेश्चंस कुछ भी नहीं बोल रहा है तो सबसे पहले आपको सेल्स बजट बनाना पड़ेगा। देन सेकंड राइट डाउन बजट क्वांटिटी of budgeted quantity of output. Budgeted quantity of output. Budgeted quantity of output. Budgeted quantity of output to be produced during budgeted period. Never mind. Second one, budgeted quantity of output to be produced during budgeted period. Remember, we are going to calculate the budgeted quantity produced. As you know, production is equal to sales plus closing stock. Sales plus closing stock minus opening stock. As you know, production is equal to sales plus closing stock minus opening stock. ये फॉर्मूला हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस योर ओपनिंग स्टॉक। Then next we will discuss
Next we will discuss the key elements. The key elements. What are the different key elements related to your production budget? First, your production planning. Production planning. First is your production planning. Production planning means how much unit you are estimated for the future, and that will be sold in the market. So that will comes from sales budget. According to your sales budget, you will plan for the production, including, as you know, your normal loss and your abnormal loss. Clear my point? While you are going to make production planning, normal loss and abnormal loss must be taken into the account. That's why the importance of your production planning is always there. Then second one is, the key factor is volume or quantity of output. Volume or quantity of output. Volume or quantity of output that is budgeted. Or target. Budgeted or targeted. How much quantity of output we are going to produce. That is also a key element. Third one is quantity of stock. Quantity of desired stock. Quantity of desired closing stock. Quantity of desired closing stock. Why closing stock is maintained within a business? To avoid the shortage. If immediate demand of the product is there, then you must supply goods and commodity to the market immediately. That's why, to avoid that shortage, you must take this desired closing stock into the account. Closing stock always maintained within the organization. And as you know, closing stock of this year is the opening stock for the next year. So according to your planning, you will also plan how much closing stock minimum you will maintain within a organization, so that if there is any more sale, to avoid that shortage, your closing stock must be maintained. That is the importance. And the fourth one is, please write down, coordination with the sales budget. Coordination with the sales budget. Coordination with the sales budget. So these are the four key elements while we are going to calculate the production budget. Clear my point? So these are the steps which will be taken into the account at the time of preparation of your production budget. मैं जितना बातें बोला आप थोड़ा ध्यान दीजिए. अगर क्वेश्चंस में ऑलरेडी बजटेड सेल है, एस्टिमेटेड सेल है, तो हमको सेल्स बजट बनाने का कोई दरकार नहीं है. अगर क्वेश्चंस में सेल्स बजट दिया नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले सेल्स बजट.
क्योंकि बिना सेल्स बजट से आपका प्रोडक्शन बजट बनेगा नहीं, क्योंकि आप लोग को मालूम है प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस योर ओपनिंग स्टॉक. So that's why your sales budget play a vital role, and these are the different 8 factors which will be taken into the account at the time of preparation of your production budget. Clear? How this production budget is prepared? How this production budget is prepared? Now you see the format of production budget is format of production budget. Format of your production budget. Please write down estimated sales. First you will take estimated sales, clear. Add desired closing stock, add budgeted closing stock or desired closing stock. लिखो आप लोग. So that is estimated sell, add your budgeted closing stock or desired closing stock and deduct therefrom estimated less estimated opening stock. Clear my point? हाँ मोसा में ये ऑनलाइन क्लास को जो मैं 5 मिनट छाड़ी के लिए नमस्कार. So less estimated opening stock, so sales plus closing stock minus opening stock, then you will get your add normal loss, or abnormal loss, clear my point? First is estimated sell, add budgeted closing stock or desired closing stock, less estimated opening stock, add normal or abnormal loss. Then you will get budgeted production. Then you will get your budgeted production. This is the format of your production budget. Clear my point? This is the format of your production budget. Now we will try to, आप लोग इसको लिखिए नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Then we will prepare और find out एक क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट from the following information.
from the following information. Prepare production budget from the following information. दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? चार्ट में बताओ, दिख रहा है कि नहीं? चार्ट बॉक्स में लिखो यस और नो। नो, ठीक है, लिख लो। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. Your production then opening stock. First write down production, then you will record opening stock, then you will record closing stock, then estimated sales, then normal loss. This is given in your questions. Clear my point? There are three types of product: X, Y, and Z. Write down X, Y, and Z. The opening stock is for X it is 10,000, for Y it is 12,000, and for Z this is 8,000. Clear my point? Then closing stock 14,000, 10,000, and 14,000. 14,000, 10,000, and 14,000. Sales 1,40,000. Clear? Second 1,20,000. And third is 1,60,000. Clear? Normal loss is 5%, 4%, and next is your 6%. This is given in the question. Please write down, and question asks to prepare a production budget. Please write down these questions, or you may take a screenshot. Clear? मैं इसको मिटा रहा हूं. Then how you will solve it? इसको टेबल बनाएंगे. पहला लिखेंगे पार्टिकुलर्स, then product X, product Y, clear, and product Z. Product X, product Y, and product Z. Clear my point? Then you will record estimated sale. Estimated sale. आप क्वेश्चन में लिखिए एस्टिमेटेड सेल. प्रोडक्ट X का दिया है 1,40,000, 1,40,000. प्रोडक्ट Y का दिया है 1,20,000, एंड प्रोडक्ट Z का दिया है 1,60,000. ये यूनिट में है.
all are in unit. Remember this thing, 1,40,000 unit, all are in unit. ये यूनिट में है, कभी भी अमाउंट में कन्वर्ट मत कर देना. This is always on unit. So estimated sale product X is 1,40,000 unit, product Y is 1,20,000 unit, and product Z is 1,60,000 unit. मैं आपको बताया था add desired closing stock, desired closing stock. You will add the desired closing stock. Closing stock X का कितना है 14,000, इसका है 10,000, इसका भी 14,000 है, इसका भी कितना 14,000 जेड का. सो प्लीज ऐड दिस टू, ये दोनों को आप ऐड करो. दिस इज 1,54,000, दिस इज 1,30,000, दिस कम्स टू 1,74,000. And out of this deduct opening stock minus estimated opening stock. Estimated opening stock ये भी क्वेश्चन में दिया है 10,000, ये दिया है 12,000. क्लियर, 10,000, 12,000 और ये दिया हुआ है 8,000. You will deduct, हाँ आप डिडक्ट करिए 1,44,000, 1,44,000, इसका होगा 1,18,000. ये सब यूनिट में है. रिमेम्बर दिस पॉइंट, यूनिट से यूनिट माइनस होगा, अमाउंट से अमाउंट माइनस होगा. ये है 1,66,000, 1,66,000. इसमें आपको ऐड करना है ऐड नॉर्मल लॉस. आपको क्वेश्चन में दिया है ऐड नॉर्मल लॉस. एक चीज ध्यान देना, मैं कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूं. पहला बोला है एज्यूम टोटल प्रोडक्शन is 100% और 100. टोटल प्रोडक्शन इज कितना? ऑलवेज एज्यूम टोटल प्रोडक्शन is 100%, and out of this 100% of production your normal loss is there, less normal loss. ये x का कितना है? x का आपका है 5%. अगर हम यहाँ 5% माइनस करते हैं तो रिमेनिंग कितना है 95%. I mean to say that 95% is your 1,44,000. ये क्वेश्चन में आपको समझना है. Always you will assume total production is 100%, and out of this 100% you will deduct the normal loss. That means the remaining is 95%. अगर 95% के लिए 1,44,000 यूनिट, देन आपका नॉर्मल लॉस 5% के लिए कितना होगा? मींस 1,44,000 डिवाइडेड बाय 95 into 5. Clear my point? And this principle is applicable to product X, product Y and product Z also. So एक बार और एक मैं बता देता हूं. Whatever production you have estimated, that is always 100% you will assume, no doubt. But out of that 100%, you will deduct the normal loss. That means rest is 95%. So 95% is equal to your 1,44,000.
क्लियर माय पॉइंट? तो 5% कितना होगा? 1,44,000 divided by 95 into 5. 5% is your normal loss. You will find out the unit of normal loss. इसका भी ऐसे होगा, कितना है? 1,18,000 डिवाइडेड, इसका लॉस कितना परसेंट है? इसका लॉस 4%, मींस 96 into 6. 96 into 6. क्लियर? और इसका कितना है? 1,66,000 डिवाइडेड बाय, इसका कितना परसेंट है? 6%, मींस 94 into 6. तो आपको नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा. दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड. ऑलवेज एज्यूम टोटल प्रोडक्शन 100%, and out of 100% you will deduct the normal loss. You will, in product X you will get 95%, in product Y you will get 96, and in your product Z you will get 94. Accordingly you will find out the abnormal loss unit. कितना यूनिट निकलेगा? X का 7579, इसका निकलेगा 7579. क्लियर माय पॉइंट? Then you will get, इसको आप डिडक्ट करिए, 1,44,000 minus 7579 is equal to 1,51,579. क्लियर माय पॉइंट? दिख रहा है आप लोग को? अच्छा. देन इन केस ऑफ प्रोडक्ट बी ये निकलेगा 4917. You will deduct this thing. अगर हम डिडक्ट करेंगे तो कितना निकलेगा? ये 122,917. 122,917. सॉरी, डिडक्ट बोल रहा हूं मैं, ऐड करना है. सॉरी, वेरी सॉरी, ऐड करना है. वेरी सॉरी, यू विल एड इट. यू मस्ट एड इट. ये सब प्लस होगा, एड इट. क्लियर माय पॉइंट? ना प्रोडक्ट जेड का कितना होगा? 10596. 10596. इसका इतना ऐड होगा, इसका इतना ऐड होगा, इसका इतना ऐड होगा. तब यू आफ्टर दैट यू विल गेट टोटल प्रोडक्शन. सो अगर हम इसको ऐड करते हैं 176,596. 176,596. क्लियर माय पॉइंट? ये जितना निकलेगा that is your estimated production budget. Whatever result you will get, that is your estimated production budget. But remember one thing, जहां कहीं पे भी आप नॉर्मल या एबनॉर्मल का बात होता है तो वहीं हम लोग को ऐड करना है. क्लियर माय पॉइंट? दैट मींस सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नॉर्मल लॉस. और एक पॉइंट यहाँ ध्यान देना है, यू विल ऑलवेज एज्यूम टोटल प्रोडक्शन 100 में से ही 5% लॉस हुआ है नॉर्मल लॉस, 100 में से ही 4% लॉस हुआ है, 100 में से ही 6% लॉस हुआ है. क्लियर? उतना अगर माइनस कर दोगे जितना होगा दैट इज योर प्रोडक्शन, तो आप वहां से निकाल सकते हैं 5% के लिए कितना होगा, 4% के लिए कितना होगा, है इतना के लिए कितना होगा. क्लियर? समझ में आया? दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ योर प्रोडक्शन बजट. क्लियर माय पॉइंट? आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. फिर मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बजट पढ़ाऊंगा आपको, मटेरियल परचेज बजट में समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में. आप सबको धन्यवाद. थैंक यू.